Well, the National Curricular Framework 2023 draft is out, and revamping school education seems to be on the cards, from board exams to curriculum changes. And of course, what does it mean for the ninth, 10th, and 11th and the 12th grades? A major rejig may possibly be in store for students of these classes, according to that particular draft by the NCF, which draws heavily from the new national education policy. Board exams twice a year, ending science, arts, or humanities and commerce streams for higher secondary students, and dividing subjects into 8 curricular areas for class 10 students. Now, these are among the major structural changes suggested by the National Curriculum Framework released on Thursday. It also talks about holistic report card and self-assessment for the benefit of the students. It also proposes no exams till class 2 and the introduction of written exams in the next classes. The assessment of students is suggested to go more serious from there onwards. Taking this discussion forward, I'm joined by Professor Vijay Laxmi Singh, who's a senior educationist, and we'll now begin to understand just how your child's schooling may change. A very warm welcome on the broadcast to you, Professor. Professor Vijay Laxmi, first and foremost, give us a sense of how you're reading this new NCF draft that's come out. Well, a new NCF draft is very pertinent, and it's very important for the students, children in the society, because it emphasizes on the educational development, meaningful educational development, I would say. And we also see there is a pedagogical shift in this draft, which is proposed, and this is not the final one. It is proposed and it is open for discussion, and it gives overall development, picture of overall development in education, and also overall development of personality of the students from age 3 to age 18. So this is a kind of draft draft on education, which will give a Swadeshi perspective also. Swadeshi means it will give perspective on our culture or tradition. I mean, it will inculcate the value and moral perspective in the personality of the students. So overall, we see that earlier the education we had was, I will not say bad, because we have been educated in that system, but that had a foreign perspective, in the sense it was colonial perspective, I would say, and we had impact of colonialist in our education system, and it continued for a very long period. Though there had been, changes in the draft of the school curriculum time to time and periodically, but these changes did not make much impact to become indigenous. So now I feel, as an educationist, that the introduction of a curriculum which is very indigenous, very Indian to us, should be very fruitful. Well, Professor, I don't disagree with you. I mean, shedding colonial past is a never-ending process. We're going to continue to shed our colonial past, and that is, the point of view. Then, of course, it is welcomed, and so is, improvement. Improvement is welcomed as well. But at the same time, do you think this is turning out into a situation where school life for a student, which is supposed to be, full of fun and talking it out with your peers, your major friendships are made in this particular period? Do you think we're pushing a lot of examinations, a lot of board exams in this particular time frame? It's more study and no play at all kind of a situation. Well, we have to see what is in the draft, final draft. It is for discussion now. I know it seems to be loaded, looks loaded, but somehow, exactly. I feel that my experience with my son, who was educated in Delhi and was in DPS, earlier he also used to feel loaded, but these Monday class tests were fun also. Sometimes that you don't have to mug up and go and do the test to get marks.
So sometimes he used to go just like that, just with the classroom teachings. So maybe in this draft, the curriculum, which looks very heavy because of these board exams, because when you say board exams, it becomes, jittery for the students that it is a board exam. But maybe when the final outcome of this draft, maybe there is lighter side of education in these board exams also. Like it says that there are various courses, various subjects you have to choose from, and you have to be interdisciplinary. You have to do science and arts both, arts and mathematics. You have to make your own syllabus. So in this case, what will happen? Sometimes it looks loaded, but it may not be so much loaded. It may be, a general kind of education for the school children, in which they will have overall view of the society. I do not know what will be the final framework of this, but I'm sure this Mr. Kasturi Rangan is an educationist of acclaim, and he knows that children wants to play, children want to have friends, children want to have school education in which they'll have play while you learn. So with this, I feel that it looks loaded because it is a change, and whenever there is a change, one is very scared of the change. Absolutely, there is resistance to change feel everywhere that as well. I'll give you a personal example here, Professor. I remember back in the day in class 9th and 10th, the CCA, the cumulative and comprehensive assessment, that did come about. People, students in my batch particularly, Yes. did not opt for the board examinations and went for the CCA, which was eventually scrapped down. The idea was the same. It was a self-assessment. It was about holistic development of the student. Do you think this is going to go down the same lane? I mean, of course, this is still up for discussion, but do you think this holistic report card and self-assessment is really going to come about and be different from what the CCA was erstwhile? Yeah, I think it is really a nice idea or concept. But you know what happens? The implementation part, it has to be implemented very seriously. You need teachers who are trained to implement such kind of programs for the students. And if they implement, in a nice way, where the students are interested in, cumulative education, cumulative exams, marks. So in that case, it will be a very good thing. But we need to change not only the perception of the education, the perception of the idea to have cumulative tests for the students, but also we need good teachers. I mean, I do not, I myself am a teacher, and I know that teachers are really very good, but they have to adapt these changes also. Generally, what happens that the seniors don't like to adapt the changes. Children are growing and they will have more adaptability to this. So we need to focus on that teaching part also. Learning is one, but teaching part also we need to focus. Absolutely. I'm just going to read out a couple of phrases, paragraphs from this framework. Can I get my earphone? It is. Well, absolutely. Well, for the benefit of the viewers out there, I'll read a few, paragraphs from the NCF 2023 draft as well. Students will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly in secondary school, including subjects in physical education, the arts and crafts, and vocational skills, so that they can design their own paths of study and life plans. And there will be no hard separation amongst the curricular, the extracurricular, or the co-curricular, amongst the arts, humanities, and sciences, or between vocational or academic streams. So certainly the student will have to go through a lot. Professor Vijay Laxmi, with us on the broadcast, has also been talking about how it looks loaded but might not be a similar situation. Professor Vijay Laxmi, do you think when we're trying to balance out assessment versus the actual learning outcomes, this is going to reap dividends, the new framework? Sorry, can you repeat the question? Because I'm trying to create, understand what the balance is going to be like between assessment. We're talking about holistic report cards and self-assessment for the benefit of the students, which is what the NCF framework also talks about.
But do you think this is actually going to turn into, it is going to pay dividends for the students' life, his or her, their career? Yeah, I think there's nothing wrong about it. I mean, of course, there's a massive change in the perception in these drafts about education, but I think it is experimental also, I would say, because we are introducing so many things which are new to the students, like about the Indian culture, tradition, combination of science and art, and combination of sport and science, and things like that. But I think we should go for this change, because once you want to be competing globally, we need global leaders, we need global students, we need global citizens nowadays who can not only compete globally, but also who can project the Indianness of the education in the global perspective. So, because now days, India is growing, and India is being recognized everywhere. Not that earlier it was not recognized, but in a different manner, that we can also be amongst the world leaders. For this, we need students who have holistic kind of education. They are sportsmen also, they are dramatists also, they are science, they know about, at least they have this scientific attitude, and the studying art and tradition of the and culture of the country. So they will have overall personality. I do not think it is. I don't feel that it can be loaded one if we implement it very carefully and very sincerely, and train our teachers accordingly, so that All right. the education which we give to our students looks very easy, and looks very, they can adapt these things Well, seriously. absolutely. The 8 curricular areas are humanities, mathematics and computing, vocational education, physical education, arts education, social sciences, science, and interdisciplinary areas. So you're right, Professor, it does look loaded, but for now, we'll just have to wait and hope for, better sense to prevail and not make it as loaded as it looks on the draft here. You're right. Mr. Miyagi in the Karate Kid also says there's not a bad teacher, it's always, there's no bad student, beg your pardon, it's always a bad teacher. And with so many board exams, I don't want these board exams to turn out to be like a boring exam, like a board exam as well. So we'll have to wait for that as well. And at the same time, assessment versus learning outcome, that's a huge debate that one has to focus on. But for more perspective on the new National Curricular Framework draft, here's my colleague Ritu Rohini speaking with Professor J.S. Rajput, who was NCERT's director from 1999 to 2004. And this is what he had to say. Let's take a look. एनसीईआरटी की किताबों में सिलेबस में हुए कुछ बदलाव के बाद देश भर में कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें भी की जा रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर जेएस राजपूत हैं। प्रोफेसर सर, ये बताइए, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से चीजें डिलीट की गई हैं, उस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि समय समय पर कुछ चीज़ों को हटाना आवश्यक होता है। शिक्षा एक गतिशील व्यवस्था है, इट्स ए डायनेमिक प्रोसेस, और यहाँ पर नई चीज़ें आती रहती हैं जिनको पाठ्यक्रम में लाना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता पहले जैसी नहीं रहती, उनको हटाया जाता है। कई बार कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी कई लोग सुझाव देते हैं, अध्यापक सुझाव देते हैं, विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तकें सारे देश में पढ़ी जाती हैं, और लगातार सुझाव आते रहते हैं, बच्चों के सुझाव आते रहते हैं। तो उसको देखना प्रतिवर्ष, तो एनसीईआरटी जो मुख्य चीज जिस पर चर्चा हो रही है वो ये है कि कुछ अंश निकाले गए हैं। ये अंश उन पुस्तकों से निकाले गए हैं जो 2005 के करिकुलम फ्रेमवर्क बनने के बाद बनाई गई थी। ये नया करिकुलम फ्रेमवर्क तो अभी आया है, शायद आजकल में आया है, उसके बाद सिलेबस बनेगा। उसमें जो नीतियां हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उसके आधार पर विशेषज्ञ बैठेंगे, हर विषय के लोग बैठेंगे, वह अपना अपना सिलेबस बनाएंगे। सिलेबस बनाने के बाद पुस्तक बनेगी।
जिसकी भी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। सर, आप 2000 सन की बात कर रहे थे, उस वक्त आप डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के। उस दौरान भी चेंजेस किए गए थे और कमोबेश इसी तरीके के सवाल उठे थे, इसी तरीके से खबरों में थे एनसीईआरटी। तो उस दौरान जो चीजें हुई और अभी जो हो रही, कैसे आप देख रहे हैं उसको, और कितना जरूरी आपको लगता है इस तरीके से बदलाव होते रहना? देखिए, मैं अपने समय की बात कहूंगा, उससे आप आगे का निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं। मेरे सामने इतिहास की एक किताब आई थी जैसे ही मैं डायरेक्टर हुआ, जिसमें मुझे ये करना था कि मैं हस्ताक्षर कर दूं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मुकदमा लड़ा जाए। किसी ने मुकदमा किया था, एनसीईआरटी को ये कहना था हम ये पैराग्राफ नहीं निकालेंगे, हम पढ़ाएंगे। मैंने एक पिता के नाते, एक पालक के नाते उस पैराग्राफ को पढ़ा और मुझे लगा कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो मैं कुछ इतिहासकारों के पास गया। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, इतिहास का नहीं हूं। मैं श्री खुशवंत सिंह जी के पास भी गया था और मैंने कहा इस पैराग्राफ को जब बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो गुरु के प्रति, गुरु तेग बहादुर के प्रति और अन्य गुरुओं के प्रति उसके मन में श्रद्धा पैदा नहीं होगी, उसके अंदर बड़ी द्वंद मचेगा। माँ तो कहेगी घर में कि गुरु के प्रणाम करके जाओ, और स्कूल में पढ़ेगा कि गुरु ने लूटपाट मचा दी थी एंड ही लेड वेस्ट द एंटायर एरिया। तो लूट, हिंदी में लूट शब्द का है, लूट मार मचा दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा। मैंने कई इतिहासकारों से बात की, सभी ने कहा कि दुर्भाग्य से जो लोग इतिहास लिख रहे हैं वे केवल पर्शियन स्रोतों पर आधारित होकर लिख रहे हैं। जो अच्छा, सिख धर्म का इतिहास तो उपलब्ध है और एक पुस्तक है विचित्र नाटक, उसका उन्होंने संदर्भ दिया खुशवंत सिंह जी ने कि उसमें तथ्य हैं। फिर मैंने लोगों से तथ्य ढूंढने को कहा। उसके बाद उस पैराग्राफ को हम लोगों ने निकाल दिया, कुछ और पैराग्राफ भी निकाले, और पूरी बात यह थी, और सारी दुनिया जानती है, जो लोग विरोध करें वो भी जानते हैं कि 1970 के बाद वामपंथी विचारधारा के 3-4 इतिहासकारों ने, जो बड़े नामी एकेडमिशियन रहे हैं, जिनकी मैं भी श्रद्धा करता हूं, लेकिन वे अपनी विचारधारा से बाहर नहीं निकल पाए और वो किताबों में हर जगह दिखाई दिया। जैसे मैं एक आप उदाहरण देता हूं, हमारी 11वीं 12वीं की एक पुस्तक में एक पाठ में गांधी और मार्क्स दोनों के बारे में वर्णन था। गांधी का चित्र एक चौथाई पेज पे था, उसके 2 पेज बाद लेनिन का चित्र था जो पूरे पृष्ठ का था, वर्णन भी उसी हिसाब से था। तो ये तो कोई भी देख सकता था, मैंने भी देखा, और मुझे लगा कि यह विचारधारा को थोपने का प्रयास इनकी पुस्तकों में स्पष्ट है। फिर भी सर, ऐसी ही कुछ आरोप जो हैं इस बार भी लग रहे हैं कि एक खास विचारधारा को, बता दूं आपको नहीं होगा, आरोप भी वही लोग लगा रहे हैं जिन्होंने उस समय लगाए थे, और आरोप ही नहीं, वो लोग मेरी जो संस्तुतियां थी, मेरी संस्था की जो संस्तुतियां थी, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि भगवाकरण हो रहा है, हिंदुत्व बढ़ाया जा रहा है, जो अगले कुछ हफ्तों में यही शब्द आएंगे, फिर से आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2002 को एक निर्णय दिया है, और मैं चाहता हूं कि आपके जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उस निर्णय को जरूर पढ़ें। 12 सितंबर 2002, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी चीजों को माना है जो हम लोग कर रहे थे, उनको सही माना है। उसमें सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाने की बात है, संस्कृत की बात है, वैदिक मैथमेटिक्स की बात है, मूल्यों की शिक्षा की बात है, हर चीज को सही माना। और ये तक कहा कि ये सब अगर 50 साल पहले होता, कब कहा, 2002 में कहा, तो देश में बहुत सामाजिक सौहार्द बढ़ा होता, लोगों ने सेकुलरिज्म को यानी पंथ निरपेक्षता को और अच्छे ढंग से जाना और समझा होता। मेरे लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इट इज एंडोर्समेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ 3 जजेस, जो हमने किया था। एनसीईआरटी फिर इस बार भी देखिएगा कि अंततः लोग समझेंगे, ये वो वर्ग है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो एनसीईआरटी कहीं ना कहीं कटघरे में इस वक्त खड़ा है, क्योंकि हर कोई सवाल उठा रहा है, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है। इस शब्द पे मुझे सख्त एतराज। जी, एनसीईआरटी को कटघरे में वो खड़ा कर सकता है जो एकेडमिकली उससे ज्यादा साउंड हो, विचारधाराओं से मुक्त हो, और जिसकी एक प्रतिष्ठा हो। ऐसी कोई संस्था देश में नहीं है जिसकी साख, क्रेडिबिलिटी एनसीईआरटी से बड़ी हो शिक्षा के क्षेत्र में, और खासकर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। इस समय देश में लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो बड़े ऊंचे पदों पर हैं। उनसे पूछिए कि आप किन पुस्तकों को पढ़कर आगे आए हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का नाम आएगा। मुझे इतना सम्मान देश में मिला, आज भी मिलता है।
जब कोई जानता है कि मैं एनसीईआरटी में रहा हूं, मैंने 33 साल वहां लगाए हैं और उस संस्था की एक शाख बनी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ नासमझ लोग राजनीतिक कारणों से संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं। अभी तक वे अन्य संस्थाओं पर कर रहे थे, अब वे शिक्षा संस्थाओं पर भी कर रहे हैं, जिसका असर उनके स्वयं के आगे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चे भी वो पुस्तकें पढ़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सर अभी जो बदलाव हुए, खास तौर पे जिन चीजों को डिलीट किया गया है, कुछ चीजों को कंसाइज रूप से दिखाया गया है, जैसे एक सवाल गांधी जी और नाथूराम गोडसे से जुड़ा हुआ है, लोग बार बार इस पे सवाल उठा रहे हैं, चीजों को कंसाइज करने की कोशिश है। आरएसएस पे जो प्रतिबंध लगे थे उसको लेकर के कई लोग सवाल उठा रहे। ऐसे में आपको क्या लगता है जिस तरीके से डिलीट हुई है चीजें वो कितनी सही लग रही है? लोगों से बहुत अच्छे ढंग से परिचित हूँ, कम से कम पिछले 30 सालों से परिचित हूँ, पहले से भी थोड़ा जानता था। ये वही व्यक्ति कह सकता है कि अगर कोई पाठ हटाया गया है या उसमें कुछ हिस्सा हटाया है, उसके कारण कई हैं, कारण होते, मैं स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, लेकिन हमने क्यों किया था, एनसीईआरटी ने तब क्यों किया, इसलिए किया था कि भाई ये अधिक हो रहा है, हमें कुछ नया जोड़ना है। जैसे अब एनसीईआरटी को कोविड के बारे में और इन तरह की महामारियों के बारे में जानकारी और ज्यादा देनी होगी, तो हम लोड बढ़ाते नहीं जा सकते। मैं उदाहरण देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ी थी 1962 में, स्पेशल पेपर। आज वो हिस्सा जो है करीब, जो मैं 700 पेज की पुस्तक थी मेरी, जो मुझे पढ़नी पड़ी, आज वो हिस्सा 10-12 पेज में आता है और बाकी सब कुछ नया हो गया। तो ये तो एक प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ तो हटेगा। और मैं एक चीज और, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि गांधी की हत्या को पूरी तरह हटा दिया गया है, उन्हें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सब पुस्तकों में जाना चाहिए। उसके बाद वो कह सकते हैं कि कहीं नहीं, अगर उन्हें कहीं ना मिले और अच्छे ढंग से उसमें पूरी चीज न मिले, तब आरोप लगाना चाहिए। ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं। टीवी 9 भारतवर्ष ने जो अभी मौजूदा समय में एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं डीपी सकलानी सर, उनसे हमने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो डिसाइड करती है, सारी चीजें हुई और उसी हिसाब से चीजें होती है। क्योंकि आप भी एक डायरेक्टर रह चुके हैं, आप फिलहाल फॉर्मर डायरेक्टर हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे डिसाइड होता है? एनसीईआरटी की पुस्तकें लिखने की प्रक्रिया लंबी है, इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने कहा ना, करिकुलम नीति बनती है शिक्षा की, फिर करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। नीति अगर नहीं भी बदले तो भी करिकुलम फ्रेमवर्क 4-5 साल बदल जाना चाहिए। दुनिया में जो अच्छे एजुकेशनली एडवांस देश हैं, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है फ्रंट लाइन करिकुलम, यानी कोई चीज इतनी अच्छी आ जाए तो अगले साल भी उसको लेना पड़ेगा, उसी साल बच्चों को बताना पड़ेगा। जैसे कोविड आया तो कोविड बताना पड़ेगा, और भी कई चीजें आविष्कार होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन की गति बहुत बड़ी है। तो पाठ्यक्रम को ही बदलना चाहिए, और पाठ्यक्रम बदलेगा तो कुछ तो हटेगा जरूर। तो उस हम कैसे करते थे एनसीईआरटी में, हमारे पास सुझाव आते थे। वो पहले तो जो विभाग हैं वहां के, जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स साइंस वाले देखेंगे, सोशल साइंस का है तो संबंधित एक्सपर्ट देखेगा, फिर वो 10 लोगों को बुलाएगा देश को, असम से लेकर के केरल, गुजरात और यहाँ तक असम, उड़ीसा, सब जगह से जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर है जाने माने, उनकी टीम किताबें उस वक्त बनी थी। उसमें कौन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, सभी संस्थाओं के लोग हमारे साथ थे। सोशल साइंस के जितने बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, वो आप 2000-2002 की किताबें देखें जो बाद में जंग कर दी गई थी राजनीतिक कारणों से, उसमें सब आपको मिलेंगे। उन व्यक्तियों के सामने एनसीईआरटी डायरेक्टर की हिम्मत ही नहीं होती कि वो किसी चीज को अपने मन से ठीक कर दे। उसको उन्हीं चीजों से जाना पड़ता है, जैसे राष्ट्रपति की स्थिति होती है ना, अगर संसद 2 बार कोई चीज कह दे तो राष्ट्रपति को दस्तखत करने पड़ते हैं। वही हाल एनसीईआरटी डायरेक्टर का है। उसका काम है अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ बुलाना, उनको समय देना, उनका सम्मान पूर्वक उनकी राय को सुनना, अपने जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठना, देखना। मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आप लोगों को, देश को बतानी चाहिए, कि इस समय भारतवर्ष में एनसीईआरटी जैसी संस्था में जो विशेषज्ञ हैं, एक एक विषय के विशेषज्ञ का दुनिया भर में सम्मान है। और मैंने उसको महसूस किया है, मैंने उसको देखा है, और कहा जाए तो आई हैव सेवर्ड इट। मुझे भी मिला है बहुत सा सम्मान, इसलिए मिला है क्योंकि मैं एनसीईआरटी में हूं। विश्व में कहीं पर भी इतनी बड़ी संस्था स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है जो एनसीईआरटी है। उसके विशेषज्ञों का सम्मान देश का हर युवा करता है जिसने एनसीईआरटी किताब पढ़ी। इसलिए इन हमारे राजनीति के महारथियों को भी बोलने के पहले थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की संस्था है, किसी पार्टी की नहीं है।
न कभी रही है। हाँ, कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया कि उन्होंने अपना ही एक समूह बना लिया, उसी से इतिहास दिखाते रहे, अन्य को नहीं आने दिया, उनकी विचारधारा नहीं सुनी, उनकी बातें नहीं सुनी, वो सुनी जानी चाहिए, मेरा ये कहना है। इसलिए जो भी हटाया गया है उस पर लोग अध्ययन करें, जाके देखें, और अगर उन्हें लगे कि हाँ गांधी जी की हत्या का कहीं वर्णन नहीं है या ठीक से नहीं है, तो मैं उनके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि एनसीईआरटी ऐसा नहीं कर सकती, न उन्होंने किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। Well, so the former NCERT director talking about how teaching and the syllabus is a dynamic and continuing process. What does the education policy, the national curricular framework have in store for our students? Well, we'll have to wait and find out. But the assessment of this improvement, which is of course welcomed, there's a little catch-22 here. It can only be done in retrospect. By the time you assess this improvement, the exams have already been written and time has passed. We'll only have to wait and find out as to what this new syllabus might turn out to be. That's all the time we have for you in this edition. Keep it with News 9 Live.